पण सुरू होणार आहे. तर त्या संदर्भात तुम्हाला एक त्या कोर्सबद्दल माहिती देण्यासाठी किंवा एक तुम्हाला करिअर ॲस्पेक्ट्सबद्दल एक सांगण्यासाठी स्ट्रक्चरमध्ये, त्यासाठी आम्ही हा वेबिनार ऑर्गनाईज केला आहे. त्यासाठी आमच्या ज्या फॅकल्टी आहेत, आमचे जे फॅकल्टी आहेत स्ट्रक्चरचे, सौरभ पाटील सर, त्यांना स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये त्यांनी त्यांचं ME केलेलं आहे आणि त्यांना BIM आणि स्ट्रक्चर्स, एस्टिमेशन, डिझाईन आणि डिटेलिंग या सगळ्यांमध्ये त्यांना 6पेक्षा जास्त वर्षांचा अनुभव आहे. 6+ इयर्सचा त्यांना अनुभव आहे. तर आणि तुम्हाला म्हणजे कोणते पण डाऊट्स असतील त्या सब्जेक्टशी रिलेटेड, तुम्ही त्यांना WhatsApp ग्रुपमध्ये विचारू शकता. आणि म्हणजे आम्ही तुम्हाला तसं फॅकल्टीसोबत हे करतो, ॲसिस्टन्स देतो आम्ही तुम्हाला. तर मी सौरभ पाटील सरांकडे हँडओव्हर करते. सर, तुम्ही कंटिन्यू करा. Okay, thank you, ma'am. ओके सर. Yeah, so good evening, everyone. So we'll just start within a 5 minutes or within a 2 minutes. Okay. Yeah. So good evening, everyone. So my name is Saurabh, and currently I'm working as a structural design engineer. Okay. Am I audible? Yes. Okay. Okay, so we'll start with the session without wasting a time. So basically, today we are here just for the consideration of this particular internship program. Okay, so basically this particular workshop or the today's training or the today's session will be divided into two parts. So the one will be the career as a structural design engineer, okay, or not the structural design engineer, the structural engineer, and the another will be the structural internship. Okay, so in the first part you'll be getting a clear idea like what are the prerequisites that you need to complete as a to become a successful structural design engineer. Okay, because this is a very niche field, and in this field you are not allowed to design any project without a licensing authority. Okay, so obviously you should have some kind of experience, and then and that you are allowed to design the particular structure. Okay, so before starting the presentation, so I wanted to like inform you that so this particular presentation will be in the Marathi, Hindi, or English. Okay, so if you have any doubt, you can just ask me at the end of the session. Okay, and one more thing, so again, if you are comfortable in Marathi or Hindi or English, you can just ask the doubt in that particular language. Okay, so don't worry about the language barrier. Okay, so first part will be his career as a structural design engineer. The second will be after knowing the prerequisites, how we are going to consider the things in the particular internship, or what we are going to cover in this particular internship. So that will be a second part. So let's start with the first part, that is a career as a structural design engineer. Okay, so all of you know that engineering is nothing but a sub branch of a civil engineering. Okay, in which you consider the safety, serviceability, and the performance of the particular project. Okay, I'm not talking about the building, because we are considering, or we are talking about the structure. The structure is nothing but the any element or any what you can say, any frame in which there are a lot of elements like the beam, column, or the slab, or the plate element, or you can just consider the pier or the line elements or the shell elements or any elements. Okay, so this is nothing but a structure, and in the structural designing you consider the safety, serviceability, and the performance of the structure. Then again, as I said, that there are different type of structures. So the residential one is there, the commercial is there, then the bridge type of structures are there, then dams are there. Okay, so depending upon the different types of structure, or depending upon the purpose of the project, you need to consider the various types of analysis and the design requirements behind those type of structures. Okay, so again, you should have experience of the analysis, that which are the different types of analysis, when to use the different type of analysis. Because see, if you just consider 10 number of analysis, so again, if you are designing a G+1, so you are not allow you can just consider the all the 10 analysis in one project. Okay, so if you are considering all the analysis in one project, and if it is not required over there, so obviously you are considering over safe design, right? So for that, you should have a clear idea or understanding about this particular thing. Again, the you should know what will be the behavior of the structure under the different type of loading condition. Suppose if I'm considering the gravity loading, so under the gravity loading, suppose this is my structure, so the structure will behave under the vertical up and down motion, because this is a gravity behavior of the structure against the gravity loading.
Okay, and if you apply the lateral load, which is a perpendicular to the height or perpendicular to the elevation of the structure, in that condition there will be a sway in the structure. So depending upon that, you should have a clear idea like how the behavior will be there and in the particular structure. And these are nothing but the structural understanding. So again, see, if you just consider one plan of a structure, or if I just draw this particular diagram over here, and if I consider column like this, just ignore the drawing skills. Okay, now if I ask you to design this particular column, so how you are going to design? Whether you are going to consider the concentric column, or whether you are going to consider the axial or uniaxial or biaxial. So that is depending upon the behavior of the particular column under the gravity load as well as the lateral load. So that is nothing but the conceptual understanding. So you should have a understanding about the structure, that the under this loading or under this type of action, so how your structure is going to behave. Okay, so basically we are going to design this column as a biaxial loaded, this will be uniaxial, and if the column is there at the center, so it will be a axial loaded. So what is the meaning of biaxial, uniaxial and axial? So that we will discuss in the like in the sessions only. Now, हु इज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर? ओके, सो मैंने आपको पूछा कि स्ट्रक्चर इंजीनियर है कौन, लाइक क्या रहता, क्या उसका काम क्या रहता है. सो इफ यू जस्ट कंसिडर द priorities, or if you just consider the responsibility of the structure engineer, so basically the basic priorities, I'm talking about the basic responsibilities. So if you just consider the responsibilities of the structure engineer, so you can just consider the doctor of the structure. Why? Because the structural engineer is a person who knows how the structure is going to behave. Okay, what will the type of analysis that I need to consider in the analysis of the particular structure. Again, he is the person who designed the structure for various gravity condition, or the various loading and the soil condition and the lateral loading and all those things. And again, he or she guides to build the builds the particular project, and he or she use the various design aids as per the standards which are available in the under the British standards or under the Indian standards. So as per those standards, he or she guides to build the engineer, builds the other engineer to construct as per the assumptions or as per the design methodology that he or she are considering in the analysis and design department. Okay, so basically you can just call it as a doctor of a structures. Okay, so now if you just consider the roles of a structural engineer, so these are the preliminary roles. Okay, you can't consider that इतना ही roles है उसका. तो ये चार ही मैंने mention किया because these are the because I thought these are the important roles, right? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चार ही है, इससे भी ज्यादा है. लेकिन कैसे ना, जो बेसिक्स है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करें. Like, so the basic roles of the structure engineer are nothing but to analyze the structural component, to consider the various loading, to consider the behavior of the structure, to consider the strength of the materials. Because if you are considering the M20 grade of concrete for the 20 for 40-story project, so obviously the strength will be the minimum, right? So you should have a proper understanding about the strength of the material. Then you should have a clear idea about how to read the drawing. Then again, you have to prepare your own structural detailing drawing from the design reports or from the design data, right? So these are the preliminary roles of the structural engineers, and he is the responsible for, these are the responsibility of the structure engineer. You can't, again I am repeating the statement that ये 8 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन दीज आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिएक्शन भी जानना चाहते हैं. जब आप एनालिसिस करते हो कोई स्ट्रक्चर, तो उसके आपको पहले मॉडल बनाना पड़ता है. मॉडल के पहले आपको जो आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स आते हैं वो रीड करना आना चाहिए. उसके बाद हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ड्राइंग, सो दैट यू शुड नो. So that means basically you need to prepare the concrete model, you need to prepare the analytical model, then you have to design the model, right? So these three models, these are the basic three models. After that, you need to communicate with the various stakeholders or various professionals which are there in the particular project or which are working on the particular project. Again, you have to guide the builder, or again you have to guide the site engineer, site supervisor. Okay, so again, all these things are nothing but the responsibilities. Okay, so again, if I'm not mentioning any responsibility from these 8 points, so just go through this slide. But again, I'll explain you all of you that these are the basic responsibility. Okay, तो जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कि अभी आपने एनालिसिस किया, तो आपको रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट निकालना है. उसके बाद आपको वो हर एक एलिमेंट डिजाइन करना है. उसके बाद आपको चेक करना है whether it is satisfying the requirement or not. If it is not, then what to do. Okay, so you have to increase the depth.
in case of beam or in case of slab or any element. So if you are increasing the depth, then you have to consider whether increasing the depth will be a economical option or will not be a economical. Because हर बार आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि नहीं पास नहीं हो रहा है तो डेप्थ इंक्रीज कर दो, पास नहीं हो रहा है तो डेप्थ इंक्रीज करो. So you have to think कि whether it is economical or not economical. If it is not, so ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डेप्थ इंक्रीज करना पड़ता है लेकिन वो इकोनॉमिकल ऑप्शन नहीं है. तो इकोनॉमिकल नहीं है तो क्यों नहीं है, तो और उसके लिए दूसरा कुछ ऑप्शन है या नहीं, नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा. सो दैट अगेन यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर. Okay, so such type of understanding should be there. Okay, because this is a field in which you are analyzing designing in the office, and then you are trying to you are implementing all this thing on the structure, and you are going to construct the structure as per the data that you are considering in the office. So if your data is wrong, so obviously that particular structure will get wrong. Okay, और हमेशा ये एक बात याद रखो कि एक डॉक्टर आणि जर तुम्ही स्ट्रक्चर इंजिनियर सिव्हिल इंजिनियर पकडलं तर काय असतं, डॉक्टर जेव्हा ऑपरेशन करेल तर एका डॉक्टरमुळे एका वेळेस एका माणसाचा जीव जाऊ शकतो जर त्याचं प्रॉपर अंडरस्टँडिंग नसेल, कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग नसेल तर. पण एका सिव्हिल इंजिनियरच्या एका मिस्टेकमुळे एका वेळेला 100 ते 1000 लोकांचं म्हणजे जीवन जाऊ शकतं. का? बिकॉज जर तुम्ही बघा, जर कधी एक डॅम जर तुम्ही कन्स्ट्रक्ट केला, त्याच्या इथे खूप साऱ्या मिस्टेक केल्या असेल, आणि जर त्याच्यामध्ये जर कधी कन्स्ट्रक्शन करताना तुमची कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग नसेल आणि खूपच चुका आहे, तर एकदा जर डॅम फुटला तर किती किती हानी होऊ शकते याचा विचार करा जस्ट. ओके, सो जस्ट बी सिरियस इन दिस पर्टिक्युलर फील्ड बिकॉज इट इज अ व्हेरी व्हेरी niche field and it is a very very interesting field also, but at the same time it is very critical and difficult also if you are not having a proper knowledge of the particular structures and the concepts. To become a now to become a successful engineer or successful structural engineer, what are the prerequisites? ओके, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए. अब तो मैं सबसे पहले हर एक स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गुड मैनुअल, दैट इज मैनुअल कैलकुलेशन. बिकॉज क्या है ना, यूनिवर्सिटी में आप लोग सीखते हैं कि हाउ टू डिजाइन द कॉलम, बीम, स्लैब एंड फुटिंग, but you are not considering the whole project as a element. Because if you are considering a whole project as a element, and if I ask you to design the particular project, okay, G+3 प्रोजेक्ट है, उसको डिजाइन करना है, आपको मैन्युअली करना है, तो आपको उसमें एनालिसिस भी करना पड़ेगा, उसमें आपको कंटिन्यूस बीम भी डिजाइन करना है. सो अगेन कंटिन्यूस बीम में आपको आई स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड है, उसके बाद आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट मेथड है, उसके बाद वेरी अप्रोक्सीमेट मेथड है. ऐसे चार मेथड है टू डिजाइन द एनालिसिस ऑफ टू एनालाइज एंड डिजाइन द कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस स्लैब. ओके, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या सिखाते हैं, तो एक ही मेथड है, दैट इज आई स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट मेथड. ओके, और द कंटिन्यू और द कंटिन्यूस द रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड. लेकिन बाकी दो मेथड का क्या, और इंडस्ट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने दो मेथड सीखा है तो वही अप्लाई करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, सिचुएशन, रिक्वायरमेंट, यू नीड टू कंसिडर और यू नीड टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर क्राइटेरियाज. देन आपको आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए. जैसे कि अभी मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि जिनको आईएस 456 2000 में पहले 4 सेक्शन में से नॉलेज नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जब भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 5, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड. एंड सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? अजम्पशंस इन द लिमिट स्टेट मेथड. लेकिन उसके पहले क्या है? उसके पहले क्या है? कंक्रीट का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कौन सा वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है तो क्या होना चाहिए, कवर का रिक्वायरमेंट. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट दोस पर्टिकुलर 4 सेक्शंस. ओके, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में हमेशा पहले 4 सेक्शन के ऊपर से ही पूछा जाता है. क्यों? क्योंकि आप साइड पे जा रहे हैं तो वो 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, डिजाइन में जा रहे हैं तो वो 4 सेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं ऐसा नहीं बात करूँ कि सेक्शन 5 से आगे इंपॉर्टेंट नहीं. इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आईएस कोड पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूरा वो आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए. आप ये नहीं कर सकते कि अभी मेरा डिग्री हो गया तो फिर आई विल जस्ट कंसिडर द सेक्शन नंबर 5 एंड आगे, लाइक अहेड ऑफ दैट ओनली. Okay, then you should have a proper understanding of the design or analysis software, then different types of analysis. Okay, अभी सॉफ्टवेयर मालूम है लेकिन आपको प्रोजेक्ट दिया तो फिर आपको पता नहीं कि कैसे चालू करना है, क्या क्या डिजाइन करना पड़ता है, कौन सा एलिमेंट कैसे डिटेल करना पड़ता है, कौन सा एनालिसिस कंसिडर करना है. सो ऑल दिस थिंग यू शुड नो. लेकिन आपको उसके साथ डिसीजन भी आना चाहिए, डिसीजन लेने आना. क्योंकि डिसीजन में क्या होता है, कभी सपोज इन केस, सपोज मेरा एक बीम है जिसका डेप्थ है 750, ठीक है, और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद मुझे बिल्डर ने बोला कि वो डेप्थ 750 है, वो कम करो, वो ज्यादा आ रहा है. तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैंने डेप्थ कम किया, कर सकता हूँ क्या नहीं. पहली बात, कर सकता हो तो क्या कर सकता हूँ, उसमें डेप्थ कम किया तो स्टील कितना बढ़ाना चाहिए. स्टील बढ़ा रहा हूँ तो उसके बाद मुझे ये भी देखना चाहिए कि दो ज्यादा स्टील नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा. ओके, ओवर एनफोर्स हो गया तो उसमें भी क्या बात है,
दूसरी बात मुझे ये भी देखना पड़ेगा एट द सेम टाइम इफ आई एम कंसीडरिंग द सेम बीम विद द सेम विद a reduced depth, so what happen, do I need to consider the singly reinforced or doubly reinforced? Okay, so all these things you should know, or you should able to take the decision on all these things, because each and every software will be a finite element based software. Okay, and in the manual design we never consider the stiffness criteria, but at the time of analysis and design we consider the stiffness criteria. So obviously if you just compare the manual result along with the software result, there will be some kind of gap, and again you should have a proper understanding what why this gap will be there. Now you should be able to predict the failure. So how to consider this particular criteria? See, मैंने ये कॉलम है, सपोज ये मेरा कॉलम है, यहाँ पे मैंने ऐसा कॉलम लोड अप्लाई किया, तो ये कॉलम मेरा ऐसा बेंड होने वाला है, राइट? So if I ask you which type of behavior will be there, so this is my buckling behavior. Okay, so this type of understanding should be there. If you are not having the proper knowledge, if I apply this load and if I ask you to design this particular column for the buckling load, so first of all you should have a clear understanding that the column is subjected to lateral or the gravity load. If it is subjected to gravity load, so what will be the buckling moment? Okay, again sometimes your column is if the height of the column is like up to 1.5 or 2 meter, sometimes in such type of columns the column is subjected to crushing type of failure. So such type of failure you should predict at before the analysis and design of the structure. Okay, then always keep this in mind. Okay, when you are designing any kind of building structure or any design or any kind of bridge structure or dam or any type of structure, in that condition you should have a first priority of designing is nothing but the strength. You have to satisfy the strength criteria in that particular structure. After satisfying the strength criteria, you have to consider the serviceability and the economy. Okay, so these three criteria are the most important, but out of these three the first and the most important criteria is strength. And always you have to design the structure in such a way that so these three criteria should be considered in a proper optimum design way or in the proper optimal way. Otherwise what will happen if you are designing from the strength criteria but and as well as the serviceability criteria but the economy is not there, so in that condition you can't consider this design as an optimal design or the effective design, right? Now, so basically there are 5 सब डिपार्टमेंट अंडर द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. ओके, सी ऐसा नहीं है कि ये 5 डिपार्टमेंट हर एक कंपनी में हो सकता है. ओके, ये मैंने एकदम माइनर लेवल पे डिवाइड किया है, जैसे कि ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग, एनालिसिस डिजाइन, देन डिटेलिंग, स्ट्रक्चरल एस्टिमेशन. स्ट्रक्चरल प्लानिंग ऐसे नाम की डिपार्टमेंट नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ता है. जब आप बेसिकली आप जब बीआईएम कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं तो वैसे कंसेप्ट पे आप पे स्ट्रक्चरल प्लानिंग करना पड़ता है. ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला 5 डिपार्टमेंट से, तो ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ऑटोकैड, आर्चिकैड, रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी. अगेन, so these are the softwares which you can just use in the BIM field. Okay, so this is building information modeling and infrastructure information modeling technology. So in this field we use this particular software, but in the structural field you use we had to use the AutoCAD and Revit structure and sometimes Revit architecture. Okay, no need to work on the Revit MEP. Then in analysis design, there are n number of softwares. If you just consider the list of the software, so these are the some software that I listed over here. But along with that, there are again Tekla structures is there, then Prota is there. Okay, so like again, then Midas family is there. So again, there are n number of softwares. So depending upon the requirement, you have to choose the software. Okay, so learning the software is a different thing, but understanding the behavior of the structure, understanding the requirement of the software is different thing. Okay. Then for detailing also there are different software, that is Procon is there, then RCDC is there, Auto Revar is there, CSI Detail is there. So again Tekla structure, you can just model the element or you can just model the project in the Tekla structure. And this is the structural estimation. See, basically what I mean to say over here, so suppose if you are working on a G+1 G+2 type of structure, in that condition sometimes your builder or your owner of the project will ask you just provide me the quantity for the concrete and steel. So you'll be able to calculate the quantity of the bars, you'll be able to quantity of the concrete from the structure or from the project, and you can just submit it to the your builder or the owner. So that such type of things will be considered in the structural estimation. Okay, so in the structural estimation, we never consider the estimation of the doors and window and all those things. We consider the estimation of the only structural elements. And same case of the structural planning also. So just ignore this particular slide, but there in some companies you need to consider the planning of the structure or the structural part or the structural work as per the MSP or the PPM. Sorry, as per the MSP or the Primavera templates. Now, up to this part, we have discussed the basic of the structural engineering. Okay, or the
prerequisites for the structural engineering. Now to apply for the license, what is the procedure is there? So the first is understand the requirements of the structural engineer. Then second step is just complete your education. So अभी जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, नहीं तो डिग्री किया है, नहीं तो मास्टर्स किया है, तो उन लोगों का अभी जिसने डिप्लोमा किया है उनका एजुकेशन थोड़ा कंप्लीट बी उनको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिन लोग का मास्टर्स हो गया तो उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया है, जिन लोगों ने बी किया है उनका भी एजुकेशन कंप्लीट हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए। एक्सपीरियंस आने के बाद ही आपको अप्लाई करना पड़ता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए, एंड उसके बाद ही आप कर सकते हैं, इसके बाद ही आपको लाइसेंसिंग मिल सकता है। Okay, so for this 5 step process we have completed the first step. Okay, after that some of you might have completed the second step, and now we are working on the third step. Okay, so in this step we need to consider some experience kind of things, that is we need to learn some extra few things which are required from the industrial point of view. And after that we will guide you how to proceed for the certification programming and all this thing. And after that, so the licensing procedure will be there. Now this was the first part of the presentation. Now coming back to the second part, that is job oriented internship in structural engineering. So सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि डिप्लोमा और बीई बीटेक, व्हाट टू डू आफ्टर दैट। ओके, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप कर सकते हैं मास्टर डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, कोई आप में से कोई कोर टेक्निकल जॉब देख सकते हैं, और कोई तो किसी को चाहिए होगा कि मेरा खुद का बिजनेस चालू करना है, मेरा खुद का बिजनेस सेटअप करना है। सो यू कैन जस्ट हैव दिस पर्टिकुलर 4 ऑप्शंस। ओके, लेकिन इनमें से जो भी थर्ड ऑप्शन है, दैट इज लुकिंग फॉर अ कोर टेक्निकल जॉब, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल। ओके, देखो मास्टर्स अभी मैंने खुद ने एमई एमटेक किया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप एमई एमटेक मत करो, मैं ये बोलूंगा आपको करना है तो करो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड रखो ये। लेकिन साइमल्टेनियसली यू नीड टू थिंक लाइक व्हाट you have to do simultaneously while pursuing the master's program. Okay, because see what happen if you are completed master's degree and still if you are not having a job, so then what you are going to do? Again you are going to invest 1 year so to take the 1 year experience, and again you are going to consider the internship program and all those things, and after that you are applying for the job. So again it will take a lot of time, right? So this is how the programming will this is how the time will get passed on that particular process. Okay, and in the government job preparation, so if I'm not saying that you don't prepare for job, again it is your personal choice, right? So what I'm saying that if you are preparing for the government and if you have the time, so you can just consider this internship, because instead of because what happened in this particular process, you'll be getting a side by side experience along with this preparation. Okay, so now considering the next slide, that is core technical job. सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, आप लोगों ने बीई बीटेक किया है, उसके बाद 4 साल मेंशन किया है, सबमिशन किया है, मार्क्स अच्छे लाए, परसेंटेज है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार आप रिजेक्ट हो रहे। क्यों रिजेक्ट हो रहे? क्योंकि उसके पीछे एक ही रीजन है, एक तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी बात आपको सॉफ्टवेयर नहीं आते होंगे, तीसरी बात सॉफ्टवेयर से लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर आते हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दोस थिंग इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बिकॉज यू आर लर्न द software in a different way, that is the individual manner. That means this is how design of the beam is there, this is how the beam column design is there, so this is how you are learn. But what happens sometime when you work in the industry, you have to work on the project only. Okay, सो वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं, इसलिए आप रिजेक्ट हो रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो इंडस्ट्री है उसका पूरा रिक्वायरमेंट पूरा मालूम होना चाहिए, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू वो आपको मालूम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैलेंजेस। जैसे फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, तो फ्रेशर में क्या होता है, बहुत बार सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है फ्रेशर स्टूडेंट्स को, दैट इज नथिंग बट द लैक ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, एज अ नाउ सपोज मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैंने आपको पूछा कि आप जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तब भी मैंने देखा है बहुत लोगों को ये भी क्लैरिटी नहीं रहती कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, whether to apply in the detailing, whether to apply in the structural designing, whether to apply in the analysis, design detailing or the modeling or the analysis or the drafting. सो वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या करना चाहता है, क्या करना पड़ता है, उसमें क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है और क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, राइट? सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। अगेन दूसरी बात जो देखा है हम लोगों ने, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल।
कभी कभी हम लोगों ने किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कंटिन्यूस बीम, so why on the support you will be getting the hogging bending moment, how you are going to consider the middle intermediate support, that means whether you are going to consider simple support or rigid support. So again, सपोज मैंने आपको एक ड्राइंग निकाल के दिखा और मैंने पूछा कि इसमें से मुझे ये बताओ कि कौन सा फिक्स सपोर्ट है, कौन सा रोलर है, कौन सा पिन सपोर्ट है। बहुत लोगों को आता नहीं, क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। देन बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज है, स्किल्स है, लेकिन फ्रेशर टैग है। तो फ्रेशर टैग है तो उसको, क्यों फ्रेशर टैग है? क्योंकि वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनी वो ये अलाउ नहीं करती है एक्सपीरियंस लेने के लिए। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, मैंने आपको मैंने मेरी कंपनी, सपोज मेरी कंपनी, मैंने कंपनी में आपको मैंने बोला कि ठीक है आप एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद 6 महीने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको ट्रेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप दूसरे कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मैं मेरे ही राइवल कंपनी को अच्छा बंदा ट्रेन करके दे रहा हूँ, राइट? सो दैट विल बी डिसएडवांटेज फॉर माई सेल्फ एंड माई कंपनी। सो उसके लिए मैं अभी कंपनी आपको अलाउ नहीं करेंगी। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर नहीं आते, उसके बाद सॉफ्टवेयर आते लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट पे वो नहीं मालूम है। उसके बाद प्रोजेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल क्या है वही मालूम नहीं है। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स करना पड़ता है, क्या क्या वेरियस अंडर रिक्वायरमेंट्स है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट देयर। सो दीज आर द सम चैलेंजेस दैट एज अ फ्रेशर इंजीनियर, लाइक मैंने देखा है एज अ फ्रेशर इंजीनियर बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। To overcome such type of analysis, such type of challenges, you need to work with the some projects or some live projects. So what happen in such type of thing, you will get a proper understanding about the life cycle of the project. You'll get in the proper requirements for the various type of projects. So suppose अभी आपका प्रोजेक्ट है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और द कमर्शियल है, तो उसमें भी आपको ये भी करना पड़ेगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल पे प्रोजेक्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पाइल फाउंडेशन लेने की जरूरत है या नहीं, लेना है तो कौन से टाइप का पाइल्स। तो ये पूरा जो रहता है ना, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको, उसके बाद जो जो अलग अलग स्टेप्स है इन्वॉल्व जो रहते हैं प्रोजेक्ट में, जैसे कि अभी आर्किटेक्ट से ड्राइंग आया तो नंबर ऑफ स्टेप्स में बोलता हूँ। आर्किटेक्ट से ड्राइंग आया तो एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर यू हैव टू रीड द ड्राइंग, देन यू हैव टू डिसाइड द कॉलम पोजीशन, then while deciding the column position you need to consider whether to go with the vertical column or horizontal column, incline or square or square, rectangle or pentagon or any which type of which shape you need to consider. Then you have to draw the column center line, then beam center line, then you have to check the 3 4 5 rule. Again you have to consider uh, the ITAS modeling. So in the ITAS model again, there is a analytical model. Then there you have to consider the materials also, that is grade of material. Then you have to consider the concrete model. So then you have to design, then detail, then preparation of the detailing, that is the drawings, then preparation of the DBR, that is design based report. Then you have to submit it to the builder plus municipal corporation plus owner, and then you have to prepare the stability certificate. So these are the overview of a number of steps that are there in the project cycle. सो ऐसा पूरा आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा तो आपको प्रोजेक्ट दिया लेकिन प्रोजेक्ट डिजाइन किया, उसके बाद करना क्या यही मालूम नहीं, राइट? लेकिन उसके बाद और एक आपको कुछ आना चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। बहुत बार क्या होता है कि जब आप काम करते हो, ऐसा होता है बीई के बाद स्टूडेंट जब एंट्री करते हैं इंडस्ट्री में, तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि किसी को क्या पूछना है, किसको क्या पूछो, किससे क्या बात करना है, कौन से लेवल पे बात करना है, इफ प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मेल कैसे लिखना है। बहुत बार ये दिक्कत आती है कि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिसको मेल करना है वही मेंशन करेंगे, फाइल अटैच कर देंगे, मेल कर देंगे। They are not mentioning the subject of the mail, they are not mentioning the mail body. So always all these things you need to consider over here. ओके, देन प्लेटफॉर्म आपको चूज करना आना चाहिए जो क्लाइंट की सबसे क्लाइंट ने मांगा है उसके हिसाब से। देन यू हैव टू प्रिपेयर द चेक लिस्ट ऑल्सो फॉर द डिजाइन एंड एनालिसिस एंड द चेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स। Okay, so all this thing will be getting when you are working with the industrial project or industrial knowledge, or if, when you are working with the industry. So for this, we as a CIT, we are here just to give you the right direction, right guidance, and the experience on the real projects. Okay, so again in this particular internship, you will be getting a proper real experience, which will be as per the industrial point of view, or you will be working on this particular internship on the step by step method only. So this is how you are going to work. Okay, so now coming back to the internship program, the last or the last part of the entire program or the presentation. Basically this is a hybrid program, that is offline or online. You can just opt for the offline also, you can just opt for the online also. The 7 month program is there. Okay, so if you have completed your diploma, BT, BTech, masters, you can just come join this particular program. Then these are the some requirements from your side. Okay,
Then obviously you'll be getting an experience from this internship. Along with that, some notes will be getting. Then IS code will be there. Again, yeah, one more thing that I want to specially mention over here. There are theoretical sessions also, and there are practical sessions also. So in the theoretical sessions, obviously we will teach you few things, and you have to note down those few things. Because see, if you are completed diploma and if you are joined this program, okay, so obviously you are not having a proper knowledge about the earthquake engineering and wind analysis. So in that condition, you have to write few things as per our guidance. So obviously we will guide you on those things also. Then the site visit will be there for the steel checking. Again, you'll be getting the access for the digital library. So that means if you want any kind of books from our library, so you can just get the access from that, from the digital library. And these are the some reports that we will discuss in the sessions. Again, you are going to prepare the DBI from the internship. Okay, so again there are some few things that is, see, अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ऐसा भी होता है कि ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट का भी काम रहता है। कभी कभी आपको एनडीटी टेस्ट करना पड़ता है। तो एनडीटी क्या रहता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे टेस्ट करना पड़ता है, तो ये भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, सो दैट you'll be getting a proper knowledge that if you get the opportunity to work in the entity department, so you can just get you'll be able to work on that thing also. ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसल्टेंट भी रहते हैं जो स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं। खाली कोई कंसल्टेंट ऐसे रहते हैं जो डिजाइन प्लस ऑडिट करते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंट को आपको ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं जॉब के हिसाब से। Then there are n number of activities like group or individual activity, presentation, code reading activity, submission of the project will be there, and project presentation. So see, कैसा होता है ना, बहुत बार ऐसा है कि आपको क्लाइंट और बिल्डर के सामने प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। देयर इज अ वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड पीयर व्यू। सो व्हाट इज पीयर व्यू? सी, अभी मेरे पास प्रोजेक्ट आया है, मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, ठीक है, एक्स वाई जेड बिल्डर है, उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया, मैंने डिजाइन किया। लेकिन बिल्डर को ऐसा लग रहा है मैंने खूब बहुत ज्यादा हेवी डिजाइन किया है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टील दिया है, कंक्रीट क्वांटिटी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है ऐसा। तो वो क्या करेगा, सेम प्रोजेक्ट मेरे से लेके किसी और स्ट्रक्चर इंजीनियर को देगा, उससे वो डिजाइन करेगा, लेकिन अब तक प्रोजेक्ट मेरे हाथ से गया नहीं है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट चेक करने के लिए किसी और स्ट्रक्चर इंजीनियर को देगा, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर चेक करके डिजाइन करके मेरा स्टील, मैंने जो स्टील प्रोवाइड किया है उससे वो काम करेगा। जो मैंने स्टील जो दिया है वो बराबर है या नहीं, मैंने ज्यादा दिया है या कम दिया है वो चेक करेगा। ज्यादा दिया है तो वो चेक करेगा कि कैसे कम करना चाहिए। कम करना है तो वो भी, उसको भी मालूम होना चाहिए कि क्यों कम कर रहा है और कैसे वो इफेक्टिव हो रहा है कम करने से। सो ये पूरा उसको मालूम होना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पीयर रिव्यू। सो इन दिस प्रोसेस, अभी सपोज जिसको प्रोजेक्ट मिला है, तो जिसको दिया है चेक करने के लिए, उसने चेक करने के बाद एक कंबाइन मीटिंग होगा, उसमें प्रेजेंट करना पड़ता है आपको कि जो मैंने स्टील ज्यादा दिया है वो क्यों ज्यादा दिया है, वो कैसे बराबर है। और उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि उसने जो स्टील कम किया है वो क्यों कम किया है और वो कैसे बराबर है। सो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन विल बी देयर। सो अगेन you should be able to work on the such type of platforms also. So these are, so because of that there are some activities. These are the some concepts that we are going to work in the internship program. See, ये इतने ही concept नहीं है, मैंने जो important concepts है वो यहाँ पे mention किया है। Again यहाँ पे बहुत सारे concept कम भी हो सकते हैं, add भी हो सकते हैं, depending upon the type of project. Okay, then these are the Indian codes along with few international code will be there. So on this code you'll be getting a detailed review. So you'll be getting a detailed review on all the code along with the Indian as well as the international, and when to use such type of codes, so that we will discuss in the sessions. Now the softwares that are there in the particular internship. So there are three department. One is drafting, detailing, analysis, design. Sorry, drafting, modeling, analysis, design, manual design, and the detailing. So these are the three departments, and under these three, so these are the softwares. So in the BIM concept, only the conceptual understanding will be there. That is, what is the BIM concept, how you need to consider this particular process, and which are the different concept or the stakeholders that are working in the particular process. What are the different job opportunity, and all those things will be there in the BIM concept. Okay, so the detail, that is the 4D, 5D, 5D, all these dimension we are not going to cover in this, because it is a very vast field. Okay, basic conceptual understanding will be there for the BIM. So it will be a near about, you can just consider 1 week workshop will be there on the BIM concept. Okay, and again if you want, you can just add these particular softwares as add-on. These are the few key projects that you are going to work. Okay, and now I'll just show you the snapshots of the projects. So this is a residential project. Okay, again a solid slab, that is a normal slab, that is beam, slab, and column will be there, and the detailing of the slab is there. Then waffle slab, that is a grid slab. Then this is a 3D modeling of the ETAS model. Again a roof slab is there. Then wash tower is there.
then such type of modeling will be there for the low rise type of structure. Okay, so basically at the end of this internship you will be able to in the position to design your own house or your any project which is like such type of in nature. Okay, again these are the this is the design of the slab. Okay, two-way slab in the safe software. Again, this is a project, the basement plan, okay, in which you have to consider the planning for the shear wall, how to place the shear wall, what will be the size of the shear wall, then how to design the retaining wall, which is there at the perimeter of the particular project, then how to consider the driveway path and all those things you need to consider. Again, this is a basement plan, so obviously at the perimeter of the plan, so these are the retaining walls. Okay, again you have to provide this retaining wall as a shear wall. So again you are going to learn this thing also, okay, how the detailing will designing will be there for the retaining wall. Then this is a pipe rack structure which we can just consider in the stat pro. Again, this is a industrial shed, that is a peb. You can just consider tapering sections are there. Okay, so columns and beam columns and the tie sections are the tapered one. Again, this is a steel multi-bay structure, okay, in which the deck slab will be there and secondary and primary beams are there along with some columns, and the lateral bracing is there. Then this is the screenshot from the safe software only for the design of the foundation. Okay. Okay, and this is the see, this is the model that we are going to consider only for the modeling purpose, not for the analysis and design. Because in this particular model, you'll be getting a clear idea how to use the advanced options that are there in the ETAP software or any or the SAP 2000 software. Again, this is the top view, or sorry, the plan view of the same project, the project that we had discussed just earlier, that is the basement one. Again, this is a the flat slab. Okay, sorry, the slab, you can just consider flat slab also. Here the we have considered the slab along with the drop panel and the column. Again, these are the some screenshots of the excel sheet that we are going to consider in the internship. Okay, so such type of internship, such type of excel sheets will be there in your course. And again, each and every excel sheet, the excel sheet that we are going to consider, so same excel sheet you are going to prepare, and we are guiding you all the, in the preparation of all these excel sheet, so that it at the end of the internship you will have the like your own software for the analysis and design. So again, suppose if you are working with the British standards or again US standards, so all the things will be in the feet and inches. So in that condition, you have to work on the feet and inches as well as the pascals. Okay, so these are the applicable for the US standards project. Okay, so this is the screenshot of my BE project. That is the preparation of the. I have prepared the one software in the Excel only for the steel design. Okay, so these are the some screenshot. Again, the same picture is there. Okay, so this is how you'll be able to study the vibration and model analysis as per the IS 1893 2002 and 2016 manually. So that was the manual design, manual analysis, and this is the again a screenshot of or you can just call it a picture of a portal frame. Again, this is a plan view. Again, this is a plan view of a different residential scheme. Okay. So these are the index plan for these different particular project. So again, we this type of project will be there. So you'll be getting a proper idea like how to consider the structural framing and all those things. Okay. Yeah. So such type of projects will be there. So see, number of project will get increased, decreased depends upon your response. Okay. Because see, we are completing a project is not a task. We need to complete that project effectively and the conceptually. Okay, and these are the some takeaway from the internship, that you'll be getting the excel sheets and the experience and the guidance of the job portfolio and the resume and all those things will be there. Okay, so now, yeah, that's it. So now this was about the structural internship program. Now if you have a doubt, just ask me, but unmute yourself one by one. Don't try to chat with the at the one time only. Okay, yes, anyone? आप अनम्यूट कर सकते हो आपको, और वन बाय वन अनम्यूट करके पूछो. Hello. या Uh, Actually, sir, please let me know, is it a paid internship or an unpaid internship? इट्स अनपेड इंटर्नशिप. Unpaid. Okay, so what will be the procedure of that? Because what I think you said, it's whole the part of structures.
Means Yeah. each and every part is covering. Yeah. So I want to ask only that what is the procedure of applying for that? So you can just ask this particular procedure with the Praveen sir. Praveen sir will guide you about the particular procedure, like how to Okay. join and all those things. If you have any kind of technical problems about the internship and all, so you can just discuss with us or discuss with me. Okay, okay, sir. Sir, actually, I have an experience of 2 years in road construction, but Okay. now I want to switch into a residential project, but no one is hiring me because I'm not having an experience in a residential project. Okay. So So basically, I was looking for an internship only. गेली का भी just ma'am, just a minute. Uh, Okay. Yeah. so I was looking for an internship only. Someone just forwarded me a link, and today I Okay. saw. So regarding that only, is it if I have taken that 7 month internship, so it will be helpful me in applying for in new companies? Yeah, obviously. See, one more thing is there. See, आप Yeah. अभी ये इंटर्नशिप करने के बाद आपको कितना यूजफुल है वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट? जी. तो हमारे मेरे एंड से तो मैं बोलूंगा पूरा इफेक्टिव है, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम. ओके. एंड सी यहाँ पे कैसे जो मैंने प्रोजेक्ट मेंशन किए, तो उतना ही जी. प्रोजेक्ट आपको जितने प्रोजेक्ट चाहिए उतने प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, लेकिन द थिंग इज if you get the one project, you have to submit that project in the up Hmm. to the last stage, and after that only you are allowed to work on the next project. Okay, so that Okay. Okay. yeah. And again, what happened in this internship program, it's offline as well as online. If you just join the offline, so in that condition, you have to sit in the office and you have to work in the office. And again, see, in the office, if you want to sit for a 6 hour or for 7 hour, you can just sit for that much hour. But as from our side, the minimum that we expect that you should be there in the office minimum 2 to 3 hours, at least Two to minimum. 3 hours. Why Okay. it is so? Because in the 2 to 3 hours, we are going to teach you the things for the particular day, and after that, we are going to assign you some tasks. So you have to complete that task. So again, it Yeah. depends on you whether you are completing the task in the office or whether you are completing the task on your at your home. Okay, but this particular internship will be totally on the project base, so you'll be getting a clear idea, thorough idea, and again, we are starting from the scratch level. So that means we are starting from the how to place the column. What are the Yeah. different requirements from the architect? What are the things that you need to discuss with the architect in the meeting, and when you have to conduct the meeting with the architect, when you have to conduct the meeting with the client, and which if suppose if you are getting any problem in the design, so where to convey that problem, when that means whether to discuss that problem with the builder or the client or with the higher authority of the structure engineer, or which one. So this is how we are going to consider. Yeah. Actually, means you are starting from bottom to taking Exactly. it to the top. Yeah. Yes, sir. I am interested in this training. ओके. सो व्हाट यू कैन डू, आई थिंक प्रवीण सर आपको अभी पूरा प्रोसीजर बताएंगे इन शॉर्ट, Okay. so you just go with that procedure. Okay. 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 Yeah. Okay. Thank you, sir. Welcome. थैंक यू सर। हम थोड़ा पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहेंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या है फीस, क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा उसके डिटेल्स बोल देता हूँ और उसके बाद फिर आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फिर भी। ये स्ट्रक्चरल इंटर्नशिप है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा लिया है क्योंकि 1 महीने 2 महीने के ड्यूरेशन में कुछ समझ में नहीं आता, और अगर हमें प्रोजेक्ट बेस पे करना है तो प्रोजेक्ट बेस के ऊपर डिटेलिंग जरा ज़्यादा लगता है और एनालिसिस भी करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें रेफर करनी पड़ती है। और एट एंट्री लेवल आपको बहुत सारे आईएस कोर्स कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाओगे। तो वैसे 7 मंथ्स भी कम गिर जाएंगे अगर आप करते हैं काम तो एकदम जेन्युइनली जो अभी हमने जो लिस्टेड प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर, तो मिनिमम वो प्रोजेक्ट्स तो रहेंगे। उसके साथ साथ आपको एडिशनल भी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे अगर आप हमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो, हाँ, ताकि ये 7 मंथ्स में आप इतने अच्छे तरह से तैयार हो पाए कि हमें ही लगे कि हम आपको कहाँ पे तो भी रेफर करके जॉब को प्लेसमेंट दे सके। हाँ, तो हमारे पास इसके बाद किसी स्टूडेंट्स ने पोस्ट किया था कि प्लेसमेंट है क्या, तो प्लेसमेंट ये इसके बाद नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 12 मंथ के इंटर्नशिप जो हम प्लान रहते हैं हमारे, वो जून में चालू हो जाती है, एकेडमिक ईयर से चालू होती है, उसको प्लेसमेंट्स रहते हैं और वो 1 साल की रहती है वो एक्चुअली। ये 7 मंथ्स की है तो इसलिए इसको प्लेसमेंट नहीं है।
स्टार्टिंग ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी ये इंटर्नशिप। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में चलेगी, मतलब जो ऑनलाइन ऑफलाइन में यहाँ पे क्लासरूम में से किया जाएगा वही रिकॉर्डेड सभी आपको ऑनलाइन में जूम मीटिंग के द्वारा दिखाई देगा। जैसे अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आपके भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ऑफलाइन के भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे। और 21 से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इसका मॉर्निंग का रहने वाला है, 10 to 2 PM ऐसे रहेगा। या सभी जो हम 10 पार्टिसिपेंट ही लेने वाले, सिर्फ इसमें 10 पार्टिसिपेंट ही लेने वाले हैं, तो लिमिटेड है। बहुत सारे अभी पिछले संडे को हमने जो वेबिनार किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके लिए इंटरेस्ट दिखाया है और कुछ ने बुकिंग भी कर दिया है। तो जिनको आज बुकिंग करना है उनके लिए कुछ ऑफर भी हम दे देंगे, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 दिसंबर है। तो मतलब आपके पास और 2 दिन है, लेकिन आप बुकिंग करके रख सकते हैं, और आज के बुकिंग के लिए कुछ ऑफर भी हम देंगे। तो वो क्या है वो मैं आपको ये कर देता हूँ। एक्चुअली ये हमारे इंस्टीट्यूट का आपके तरफ, हमारे तरफ से ये ऐसे सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ जो भी सेशंस होंगे अपने, जो भी सेशंस होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन के जो भी, तो वो सभी सेशंस रिकॉर्डेड रहेंगे, जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप और रेफर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसके लिए और मेरे अपडेटेड है, तो अपडेटेड के हिसाब से आपको 2 साल के लिए ये सेशंस मिल रहे हैं, मतलब 7 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप, और जो भी रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे वो आप 2 साल के लिए रेफर कर पाएंगे, अनलिमिटेड टाइम्स। तो ये भी आपको बेनिफिट होगा, मतलब कुछ सेशंस मिस हो जाते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं, कुछ डाउट्स आ गए घर पे भी, तो आप वो रेफर करके ये कर सकते हैं। और डाउट के लिए हमारे पास और भी एक ये है कि जो सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो सभी लोग एडिक्ट है उसके, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसके ऊपर भी हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे जॉब अपडेट भी आपको दिए जाएंगे। कोर्स का फी अगर कहा जाए, कोर्स का फी 1 लाख तक कोर्स का फीस है, लेकिन ऑफर में हमने वो 75,000 रखा था ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए वही फीस 50,000 है। लेकिन अगर आप आज बुक करते हैं, हाँ, कम से कम 1000 रुपीज देके अगर आज बुक करते हैं आप, आज 9 बजे तक अगर आप बुक करते हैं, तो आपके लिए 5000 और ऑफ हो जाएंगे, 70,000 इसका फीस रह जाएगा 7 मंथ्स के लिए। हाँ, कंटेंट तो आपको सर ने बता दिया है, वो सभी वो वेबिनार के ऊपर है, लाइव सेशन चालू है, लाइव में भी है वो। हाँ, बुकिंग के लिए आपको ये लिंक है, तो लिंक भी मैं ये लिंक अभी चैट बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ, तो इससे कर सकते हैं। या बुकिंग का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। अपना इंटर्नशिप ऐप है, ये लोगो सिंबल आपको ऐसे आइकॉन दिखाई देगा। इसका लिंक भी शायद मैडम ने आपको शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। तो प्ले स्टोर पे है ये, आईफोन पे चाहिए रहेगा तो CIIT के ऐप के द्वारा आपको यहाँ ये एनरोल करना पड़ेगा। परचेस करने के लिए एक टिपिकल मैंने फॉर्मेट यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि परचेस करने के बाद ये इंटर्नशिप ऐप आपको यहाँ पे स्टोर दिखाई देगा। स्टोर में आपको नीचे जो कोर्स है वो सिलेक्ट करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। आपने ये इंटर्नशिप आपको 7 मंथ्स का सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो बाय नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी ये एक एग्जांपल है, इसलिए यहाँ पे ये 10,000 का दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको सिटी स्टेट आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, वैलेट से, फोन पे है, UPI अलग अलग टाइप के है, नेट बैंकिंग है, और उसके साथ साथ EMI के भी कुछ ऑप्शन है, जो जिनको अगर ऐसे लगता है कि फीस अभी पे नहीं कर सकते इतना सारा, तो EMI के भी ऑप्शन है 3-4। तो उसमें से EMI ऑन कार्ड के ऊपर आप जाके, क्रेडिट कार्ड रहेगा या डेबिट कार्ड, आपके पास लिमिट रहेगा। कुछ बैंक्स प्री अप्रूव्ड लोन भी देते, मतलब डेबिट कार्ड के ऊपर भी EMI अवेलेबल करके देती है, वैसे सिस्टम रहेगा तो डेबिट कार्ड से भी हो जाएगा। तो आपको वो चेक करने के लिए ये यहाँ पे व्यू EMI प्लान्स है, तो यहाँ पे व्यू EMI प्लान्स के ऊपर क्लिक करके आप अलग अलग बैंक के प्लान्स देख सकते हैं। मतलब अगर आपने 10,000 का सपोज ये कोर्स है, तो 10,000 का कोर्स आप 24 मंथ्स तक अपना जो 70, अगर समझ लीजिए 70,000 का टोटल का आपको EMI करना है, तो आपको करीबन 24 मंथ्स तक आप ये कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का है आपके पास, अगर आपने वो ले लिया, तो आपको करीबन 3,500 का ही इंस्टॉलमेंट आ जाएगा।
और पूरा होने तक आपके करीबन 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा जाएंगे 70,000 के जगह, लेकिन वो 24 मंथ्स में जाएंगे। तो 2 साल के लिए भी आप ये ऐसे कर सकते हैं, ईएमआई का ऑप्शन ले सकते हैं। ये बैंक के तरफ से अवेलेबल है, हमारे तरफ से ऐसे कुछ अगर कहा जाए तो दूसरा मॉडल है जिसमें 40,000 आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 40,000, 1,000 तो बुकिंग है आपका, 40,000 डाउन पेमेंट कर सकते हैं और 10,000 के 3 आपको चेक देने पड़ते हैं पीडीसी। हाँ, तो ये सारे ऑप्शंस है। कॉन्टैक्ट नंबर और जो आपको अगर मिलना है तो यहाँ पे आपको 3rd फ्लोर पे केतकी प्रीमाइसेस है, जो अलका टॉकीज, पूना में अलका टॉकीज है, अलका चौक भी कहा जाता है, डेक्कन का बस स्टॉप भी नजदीक गिरता है वहां से, तो वहां पे आपको आना पड़ेगा। डेक्कन टॉकीज के बाजू में ही ये केतकी प्रीमाइसेस है, बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पीछे साइड में है, 3rd फ्लोर पे आपको आना पड़ेगा। वहां पे आपको आके यहाँ पे से भी बुकिंग कर सकते हैं आप। हाँ, आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो भी पूछ सकते हैं। 15th लास्ट डेट है अगर ये करने का। अगर ये हो गया तो 2 बैचेस भी हो सकती है, मतलब उसकी नेक्स्ट बैच 2 to 6 PM की ऐसे भी हो सकती है। हाँ, तो 4 आवर्स तो कम से कम हमें ऐसे लगता है कि 4 आवर्स तो आपने कम से कम यहाँ पे देने चाहिए। उसके बाद के आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ऑफिस तो ओपन रहेगा कंटिन्यूस। आपको मैं ये भी शेयर दिखा देता हूँ कि ऐप के ऊपर क्या क्या है। ऐप के ऊपर क्या करना पड़ता है, आपको स्टोर में जाना पड़ता है। स्टोर में जाके आपको सर्च करना है स्ट्रक्चरल इंटर्नशिप। तो उसमें आपको ये 7 मंथ्स इंटर्नशिप, यहाँ पे 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, लेकिन अभी इसके बैचेस नहीं है, ये मिड मिड में है और अभी नेक्स्ट बैचेस नहीं हो गए इसके। 7 मंथ, क्योंकि अभी हम 7 मंथ के लिए जा रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड में लॉकडाउन भी ओपन हो रहा है अभी। तो यहाँ पे आपको कंटेंट में इसका पूरा ब्रोशर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें कंटेंट पूरा लिखा हुआ है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी का उसका सैंपल भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से लिंक सभी पोस्ट किए कि मैं एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, इंटर्नशिप ऐप का भी है लिंक पोस्ट किया हुआ, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैडम ने लिंक पोस्ट किया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको वहां पे आपके डिटेल्स और वो सभी पता चलते जाए। यस यस चेरी जी, आपके कुछ डाउट्स है? आप इंटरेस्टेड लग रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखा है ऐसे। हेलो, ओके, किसी के डाउट्स नहीं रहेंगे कुछ? पूजा मैडम, आपके डाउट्स क्लियर हो गए सभी? हाँ, नहीं अनपेड नहीं है ये, आपको पे करना पड़ेगा ये इसमें। हमारे तरफ से कुछ सैलरी नहीं रहेगी यहाँ पे मैडम, स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरे ट्रेनिंग और आपके डेवलपमेंट पर्पस बनाया गया है। इसमें हमें फुल टाइम डिवोशन देना पड़ेगा, सीट्स भी कुछ रिजर्व रखने पड़ते हैं, और लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी देके, मतलब वो देखते देखते आपको ट्रेन भी करना है, इसलिए इसको फीस रखी गई है। ठीक है, चलेगा। फिर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। नंबर्स भी, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर किए हैं। आप इंस्टीट्यूट पे आके भी मिल सकते हैं, और ऐप के ऊपर डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। मैं बुकिंग का लिंक एक बार खाली पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप आज 9 बजे तक अगर आप बुकिंग कर देते हैं तो आपको 5,000 ऑफ मिल जाएंगे। ₹1,000 करके बुकिंग करना है। ये एक लिंक मैंने सभी के लिए पोस्ट कर दिया है। ये चलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सौरभ सर। वेलकम सर।